Hello everyone. Uh, I am Assistant Professor Nitiraj Mandloi. So we are going to start our live session on micro interactions in UI UX using Figma. So what are micro interactions? These are, we can say, these are small animations which makes our digital product or application live. We can say they makes alive them. They makes engageful for the user. Okay, just like for example, if we click on the like button, okay, it converts into red color, and some maybe tiny uh, circles are going on around them. Or if we click on the praise button, it changes its color. You know, when we click on a toggle switch, the circle moves on the opposite direction as well as its colors change, so that user will get information that yes, it is now selected. Okay, so these are some examples of micro interactions in the components of user interface. So why these big companies or big websites use these small animations? Okay, गूगल, एप्पल, स्पॉटिफाई और दूसरे भी जितनी बड़ी कंपनीज हैं या वेबसाइट्स है, वो इतनी एफर्ट्स क्यों लगाती है इन एनिमेशंस को बनाने के लिए? वही चीज़ है, बिकॉज ये आपके एप्लीकेशन को या आपका जो डिजिटल प्रोडक्ट है उसको मोर इंटरेक्टिव बनाता है. इट मेक्स मोर एंगेजिंग. ओके, यूजर को थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करता है ना. जस्ट इमेजिन करो आप कि आपने यूट्यूब का लाइक जो बटन है उस पर क्लिक किया, एंड पहले क्या होता था कि जस्ट वो लाइक पर थम्स अप जो है उसमें कलर फिल हो जाता है, दैट्स इट. अभी क्या होता है, जब आप यूट्यूब पर क्लिक करते हो लाइक बटन पर, तो आसपास कुछ में भी कुछ स्मॉल थिंग्स जो है वो स्प्रेड होती है और वो एक सेलिब्रेशन टाइप क्रिएट करता है. सो इट मैक्स अ फीलिंग ऑफ सेलिब्रेशन, है ना, कि यू लाइक दैट वीडियो. ओके, सो फॉर द यूजर एज वेल एज ऑनर ऑफ दैट चैनल ऑल्सो, कि हाँ, मेरे वीडियो को किसी यूजर ने लाइक किया है. ओके. So these are interactive movements, we can say. They are for around maybe 0.2 to 0.5 seconds. Okay, इतना ड्यूरेशन ठीक है. बहुत ज़्यादा आप स्लो कर दोगे उसको, मे बी कभी रिक्वायरमेंट हो तो दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट नॉर्मली दे आर फ्रॉम 0.2 सेकेंड टू 0.5 सेकेंड्स. उतना ही रहता है उसका ड्यूरेशन. ओके, ज़्यादा कर दोगे तो ऑब्वियसली वो स्लो हो जाएगा, एंड इससे थोड़ा सा और अगर आपने ड्यूरेशन कम किया तो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा उसका स्पीड इंक्रीज हो जाएगा, तो मे बी उतना इंटरेक्टिव नहीं लगेगा, या जो स्मूथनेस क्रिएट होता है उस एनिमेशन में वो स्मूथनेस क्रिएट नहीं हो पाएगा. ओके, इट विल लुक लाइक अ रिजिड थिंग. So these small animations, we call them interactive micro interactions. So they makes the user what is happening, what happened and what should happen next. इन तीन चीजों के ऊपर जो है वो यूजर्स को ऑब्जर्व करवाता है. ओके, एक छोटी सी अगर हम मे बी इसको फॉर्मूले के बेस पर ले, तो सबसे पहले यूजर ने फॉर एग्जांपल किसी बटन पर क्लिक किया, दैट इज द एक्शन, यूजर एक्शन. ओके, नेक्स्ट थिंग, सिस्टम ने इसको रेस्पॉन्ड किया. कैसे किया? कि जब लाइक बटन पर क्लिक किया तो उसका जो आइकॉन है, जो हार्ट आइकॉन है, वो कलर चेंज होगा. मे बी इट विल इंक्रीज इट्स साइज, है ना, या फिर उसके आसपास जो सेलिब्रेशन के एलिमेंट्स है वो वहाँ से वो होंगे, वैसा कुछ होगा. विजुअल फीडबैक, यूजर को विजुअल फीडबैक मिलेगा दैट यस आई हैव क्लिक्ड ऑन दिस लाइक बटन. ओके, एंड यूजर सेटिस्फैक्शन. और साथ में ऑब्वियसली यूजर को पता चलेगा कि मैंने कुछ एक्शन परफॉर्म किया एंड उसका रिप्लाई आएगा एप्लीकेशन की तरफ से, तो इट विल यूजर फील अ काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन थिंग. ओके, so when you click on this like button, the icon grows, bounces, vibrate, changes color, confirm your action that yes, user has performed this action. These tiny animations makes the interface feel alive. Now, what are the benefits of these interactions? So user get immediate feedback. he uh, he knows कि हाँ, मैंने ये एक्शन परफॉर्म किया है. ओके, प्रिवेंट एरर्स. अब प्रिवेंट एरर्स कैसे हो सकता है? कि फॉर एग्जांपल यूजर के लिए लॉग इन करना है, सो ही पुट इट्स यूजर नेम एंड पासवर्ड. पासवर्ड में मे बी पासवर्ड रॉन्ग हुआ है, तो क्या होगा, दैट पासवर्ड का जो टेक्स्ट बॉक्स है
उसके आसपास जो बॉर्डर है मे बी इट विल बिकम रेड और एरर कुछ आएगा, या फिर मे बी वो जो पासवर्ड का जो टेक्स्ट बॉक्स है वो वाइब्रेंट होगा थोड़ा सा, है ना, सो दैट यूजर विल कम टू नो कि हाँ आई हैव डन सम एरर। इम्प्रूव यूजर एंगेजमेंट, यूजर का जो एंगेजमेंट है उस पर्टिकुलर फीचर के साथ में वो और ज़्यादा एनहेंस होता है और इम्प्रूव होता है। ट्रस्ट, लाइक बिल्ड ट्रस्ट लाइक प्रोग्रेस बार। फॉर एग्जाम्पल आप किसी फॉर्म को फिल कर रहे हैं, है ना, प्रोफाइल फिल कर रहे हो, मान लो यूजर प्रोफाइल फिल कर रहे हो, वहाँ पर अराउंड 3 पेजेस का वो फॉर्म है। ओके, सो आप जैसे जैसे फॉर्म को फिल करते हैं वैसे वैसे आपको एक प्रोग्रेस बार आता है कि हाँ मैंने अभी 20% मेरा जो फॉर्म है वो फिल किया है, देन 30% किया है। या फॉर एग्जाम्पल आप कुछ परचेस कर रहे हैं किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पर और वहाँ पर जाकर के आप पेमेंट की प्रोसेस कर रहे हो, तो पेमेंट की प्रोसेस में वो आपको फीडबैक दे रहा है कि आपने अभी पेमेंट का प्रोसेस इतना परसेंट आपका कंप्लीट हुआ है, इतना बचा हुआ है। या प्रोफाइल में अगर अगेन अगर हम आए तो इट्स नॉट कंपलसरी कि यूज़र एक ही बार में बैठ करके अपना प्रोफाइल का जितना भी कंटेंट है वो फिलअप करे, है ना। सो माइट भी वो ये हो सकता है कि वो सोचे कि नेक्स्ट टाइम में जब इस ऐप को यूज़ करूँगा या कभी प्रोफाइल और कभी फिल करूँगा तो वहाँ पर इट विल शो टू द यूज़र कि हाँ आपने इतना 50%, अराउंड 50% आपने आपका प्रोफाइल का कंटेंट फिल कर दिया है, नेक्स्ट 50% इज रिमेनिंग एंड यू हैव टू फिल अप। ओके, सो वो एक प्रोग्रेस बार चलता है सो दैट यूजर को भी पता होता है कि मैंने कितना टास्क मेरा परफॉर्म किया है, कितना बचा हुआ है, ये सब चीजें रहती है। इम्प्रूव ब्रांड पर्सनैलिटी, गूगल एनिमेशन फील प्लेफुल ऑब्वियसली, है ना, स्पॉटिफाई एनिमेशन फील स्मूथ। तो ये एक थोड़ा सा ब्रांड से रिलेटेड भी चीजें हम हो सकता है कि उसका जो फॉर एग्जांपल अगर हम एप्पल की बात करें तो एप्पल की साइट पर अगर आप जाएंगे और वहां पर देखेंगे तो उसका एनिमेशन बहुत स्मूथ एंड सिंपल होता है। एप्पल का जो ब्रांड है उसमें या एप्पल के किसी भी एडवर्टाइजमेंट में आप देखोगे, इवन किसी बिलबोर्ड पर भी देखा आपने, तो उसके एडवर्टाइजमेंट बहुत सिंपल होते हैं, है ना, और मिनिमलिस्टिक होते हैं। तो वैसा ही जो उन उसका यूआई है वेबसाइट का या ऐप का, वो भी बहुत मिनिमलिस्टिक एंड सिंपल होता है ना, और उस पर जो ये इंटरेक्शंस रहेंगे वो भी बहुत सिंपल वे में एनिमेट करेगा वो। ओके, सो वो एक ब्रांड की पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। So these are the 5 benefits. Okay, first is user get immediate feedback, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देन एरर प्रिवेंशन में भी हेल्प करता है, यूजर को अगर एरर होती है तो यूजर को वो फीडबैक प्रोवाइड करता है कि यू हैव डन सम एरर। देन यूजर के साथ में एंगेजमेंट इंप्रूवमेंट करता है, ब्रांड ट्रस्ट, एंड देन इम्प्रूव ब्रांड पर्सनालिटी, और वी कैन से इट कैन supports to uh, brand personality of the brand of that particular company. So here are the 4 components of the micro interactions. First is trigger, when you click a button. ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है कि सबमिट बटन पर क्लिक किया, सो यहाँ पर वो रिफ्रेश हो रहा है, रिफ्रेश के लिए वो जो एरो है इट विल मूव टूवर्ड्स अप्स डायरेक्शन, है ना, तो वो एक ट्रिगर कर रहा है किसी भी एक्शन को। ओके, फॉर एग्जाम्पल टैब स्क्रॉल वॉइस हो गया, विल सी सम एग्जांपल्स, इंटरेक्शंस का हम लोग एग्जांपल देखेंगे। देन रूल्स, द लॉजिक दैट डिफाइंस द एक्शन। ओके, वो एक सीक्वेंस में परफॉर्म होगा, वो कंडीशंस क्रिएट करेगा, तो ये चीज़ें भी आती है। एंड देन फीडबैक, यूजर को वो फीडबैक प्रोवाइड करता है कि हाँ लाइक पर क्लिक किया, देन वो फॉर्म लोड हो रहा है एंड देन वो कॉपी हो गया कंप्लीट। ओके, देन लूप्स एंड मोड्स, तो मे बी फॉर एग्जांपल जो आपका प्रोग्रेस बार है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये लोडिंग स्पिनर दिया हुआ तो वो कंटिन्यू चल रहा है लूप में जब तक वो टास्क जो वो कंप्लीटली लोड नहीं होता है। या फॉर एग्जांपल आपने जीमेल से कुछ डाउनलोड किया है तो डाउनलोडिंग के टाइम पर आपको वो परसेंटेज दिखाएगा, या वो जो सर्कल है वो कंप्लीट जब तक नहीं होता है वो तब तक आपका, दैट मीन्स कि योर डाउनलोडिंग इज स्टिल गोइंग ऑन, है ना, आप तब तक आप उसको क्लोज नहीं करो विंडो को। ओके, या फिर जो मोड्स हैं, डार्क से लाइट या लाइट से डार्क करने के लिए आप टॉगल्स को ऑन ऑफ कर सकते हो, स्क्रोलिंग के लिए होता है। ओके, सो ये बहुत हेल्पफुल होते हैं चीज़ों को क्रिएट करने में या यूज़र जो एक्शंस परफॉर्म करता है उसके फीडबैक देने के लिए स्पेशली। नाउ टाइप्स ऑफ माइक्रो इंटरेक्शंस में बटन स्टेट्स, बटन स्टेट्स का मतलब ये होता है कि व्हेन योर बटन इज स्टिल देयर, है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पर डिफॉल्ट लिखा हुआ है तो नॉर्मली नॉर्मल पोजीशन में बटन है, दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट। ओके, देन व्हेन यूजर विल माउस ओवर ऑन दैट बटन, दैट इज कॉल्ड होवरिंग द बटन। ओके, तो जब आप माउस ओवर करेंगे तो होवरिंग करेंगे तब वहाँ पर जो कलर है वो चेंज होगा किसी भी लिंक का या कुछ,
फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखें तो व्हेन आई एम माउस होवरिंग ऑन दिस ट्रांजिशन ऑप्शन, उसका कलर, बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। ओके, थीम पर जा रहा हूँ, थीम पर बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। एज वेल एज नीचे एक आपको लेवल आ रहा है, चेंज थीम। ओके, लेआउट पर आया तो इट इज सेइंग अप्लाई लेआउट। So these are the four states of button: default, hover, pressed and disabled. Next is toggle switching, that is maybe you can say logical things, है ना, कि आप उस एक्शन को परफॉर्म ऑन करना है या ऑफ करना है किसी फीचर को। ओके, नोटिफिकेशंस, व्हेन यू विल गेट नोटिफिकेशन काइंड ऑफ थिंग, तो वहां पर जो नोटिफिकेशंस आते हैं। फॉर्म वैलिडेशन, आप किसी भी डेटा को फिल कर रहे हैं, वो डेटा प्रॉपर वैलिडेट है या नहीं। पुल टू रिफ्रेश, आप किसी पर क्लिक कर रहे हैं तो रिफ्रेश के टाइम पर जो एनिमेशन होता है। एंड लोडिंग एनिमेशन, जो भी आपका एनिमेशन है या मे भी डाउनलोडिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उस टाइम पर जो लोडिंग एनिमेशन चलता है, वो सब चीज़ें। एंड देन एम्प्टी स्टेट, लास्ट इज एम्प्टी स्टेट। सो अभी हम छोटा सा एग्जांपल्स कुछ देखते हैं जिसके थ्रू हम प्रैक्टिकल पता चलेगा कि एक्चुअली माइक्रो इंटरेक्शंस होते क्या हैं। ओके, सो अभी हम लोगों ने जैसे एग्जांपल देखा है यहाँ पर टॉगल का, टॉगल बटन क्रिएट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील क्रिएट अ फ्रेम, जो भी साइज आपको फ्रेम का रखना है। एंड देन maybe create a rectangle. Now corners थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, अराउंड मे बी 16 ज़्यादा हो जाता है, 12 पिक्सल्स। इसको कलर हम वाइट फिल कर देते हैं, या मे बी ग्रेइश, राइट। Within this rectangle we'll create a small circle, we'll fill up a dark grayish color. So say this situation we can say it's disabled, in disabled position. Now make copy of this frame, okay, by pressing the alt key and drag the mouse button, and then here we will change its state to right side. Change, we'll make change its color to maybe we can say green. सेम यहाँ पर भी ग्रीन कलर कर देते हैं, it will be light green. थोड़ा सा डेप्थ क्रिएट करने के लिए विल क्रिएट अ स्लाइटली ड्रॉप शेडो, that's okay. Now click on this frame 1, go to prototype option. Here when you click on this button or rectangle, press down this plus sign. When user will click on this, it will bring us the frame number 2. Okay, now click on it, on tab, navigate to frame number 2. Now ये instant की बजाय we will change it to smart animation, and smart animation ease in ease out you can set it. Okay, is in back कर सकते हैं, customize आपको करना है तो you can create your own customize bezier. हम लोग यहाँ पर easiest way में we can say ease out रखते हैं। अगर आपको थोड़ा सा मे बी ड्यूरेशन इंक्रीज करना है, थोड़ा स्लो एनिमेशन बनाना है, सो यू कैन इंक्रीज दिस नंबर्स। अभी 300 इज फाइन। नाउ क्लिक ऑन दिस प्रीव्यू बटन, and we click on it, see. Okay, now अब इसी पर सेम ऑप्शन हमको जस्ट अपोजिट परफॉर्म करनी है। व्हेन आई विल क्लिक ऑन दिस ग्रीन बटन, इट शुड कम बैक टू द ग्रे वन, है ना, वो फिर से डिसेबल हो जाएगा। सो फॉर दैट you have to just do the opposite action, click on the frame 2,
select this rectangle or even you can click on this कि आप particular चाहते हो कि जब user इस circle पे click करे then only that action should perform. तो you can click on this circle and यहाँ से भी आप बना सकते हो. Right now I am selecting this rectangle. Just drag the arrow towards the gray button. That's it. Do the same thing on tab, navigate to frame 1, start animation is out 30 milliseconds. That's it. And I will click on this button anywhere, move हो जाएगा. इसीलिए मैंने rectangle पर लिया था. Okay, so that up within the rectangle, when you click anywhere, it will perform the animation or action. Click here. Okay, इतना easy है micro interaction. It's not that much tough. बस आपको ये ध्यान रखना है कि animation should be smoother. Okay, जैसा आपका requirement है उसी के according आपको animation करना है. We'll take some more examples. For example, mouse over button. So again, we'll create a frame. Text. Example यहाँ पे हमने क्या है login. Make sure when you are designing something, your design tab should be activated, and then we'll increase its text size to around say for 28. Okay, to place it exactly in the center of the rectangle, select both text and rectangle and go to the position and align them to the center, vertical and horizontal position in center. Okay, थोड़ा सा we can create its corner radius to 12. Okay, 12 जाएगा, so 8 कर सकते हैं हम लोग. इसका कलर पर्पल. वाइट कलर ट्राई करते हैं. Yes. Okay. So this is our first section. Second क्या होगा, when your user will mouse over it या hover condition में button जो है उसका size थोड़ा सा increase होगा and its color will get little bit darker. So I will select this rectangle. Make sure its dimension aspect ratio is button is on. Okay, so that its width and height will increase proportionally. यहाँ से I will make it around let's say 200 pixel width. So see height उसी proportion में उसका increase होगा. Log in and select them and यहाँ से हम center ले लेते हैं. Color should be little bit darker. Okay, when user will press it, okay सा होगा थोड़ा सा अगेन इसका जो width होगा 174 था, so we'll make it 165. text का size around 22, so that वो pressed लगेगा. Okay, and then release करेगा तो वापस back हो जाएगा यहाँ पर. So I'm selecting this frame number 3. Go to prototype, select this rectangle. Okay, so that user will click anywhere within this rectangle. It will change to frame number 4. On tap navigate to frame number 4. Smart animation easy, जो भी आपको animation का duration चाहिए. Okay, next when user will click on it. Okay, so यहाँ पर आएगा while pressing. So when user will press down the mouse button, this button or this frame number 5 will appear. After releasing the mouse button, it should go back to the frame number 3. So mouse leave, go back to the frame number 3.
click on this button, mouse over, start. Sorry, टैब था यहाँ पर. We have to select it while hovering. Mistake. Okay, when click, it's small हो गया वो. When release, वापस back हो गया. Okay. So we can create such type of animation. I will show you one more example. Like card जो slide होते हैं वैसे कुछ देखना है. So for that we'll take a plugin और यहाँ से we'll take some images. So unsplash, go to plugins, unsplash. We'll search for some, let's say, monuments. First, okay, so these are some images. Now when user will click, or we can say, sorry, not click, but when user will drag its mouse button, वो slide होगा थोड़ा सा image. Okay, so for that, obviously, first of all we have to create a frame. Just make sure कि वो एक proper size में हो. ये size ना fine, ठीक है. Size is 265 by 385. ठीक है, इसको भी हम लोग कर देते हैं 265 by 385. में भी आपको थोड़ा सा कार्ड काइंड ऑफ रखना है, सो थोड़ा सा रेडियस अप्लाई कर लेते हैं. Radius 8. Okay, now we'll bring them together. You can say center में एक्सेक्ट करेंगे. Okay, and जब ये इमेज रोटेट होगा इट विल डिसअपियर, एंड जो उसका बैक साइड वाला इमेज है इट विल गेट अपीयर्ड. अब इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि व्हेन आई एम रोटेटिंग इट क्या हो रहा है, वो एग्जैक्ट सेंटर से रोटेट हो रहा है. ओके, सो वी हैव टू चेंज इट्स एंकर और पिवट पॉइंट. The shortcut is select it, Alt and drag its pivot point.
Just a minute. Just a minute, इसका ओके फाइन, ठीक है. Pivot point activate नहीं हो रहा है. Maybe there is some error or might be I forgot something. Shortcut is basic Alt R. So pivot point should get active और उसके बाद में वो चीज़ हो सकती है, but right now नहीं हो रहा है. ठीक है, that's okay. We'll do कि slightly move होगा and while it will move वो disappear हो जाएगा and next step पर आपका next image appear होगा. So first we'll make its height and width again in proportion to, let's say, 300 pixels of width. ठीक है, so 300 pixels. Then make copy of this frame. now यहाँ पर क्या होगा, it will move towards right direction. halfway में it will disappear and ये जो image है ये ऑटोमेटिकली आपका 300 पिक्सल्स होकर के बड़ा हो जाएगा. नेक्स्ट फ्रेम में ऑलमोस्ट हाफ डिसअपियर, इस इमेज को 300 पिक्सल्स. This is our last image. So when user will click on a back button, it will go back to the first frame. Let's say 28. Okay, so go to again prototype. We want कि when user will drag the mouse, ये image हटेगा and next image will appear. So instead of this tap, we have to
click on while hovering, while mouse button touch down, touch up, we'll say mouse enter. जब mouse enter होगा तभी वो change हो जाएगा. You get to frame 7, smart animation, same thing. Mouse enter. या enter के बजाय हम लोग ले लेते हैं drag. On drag better है. And जब यूजर बैक बटन पर क्लिक करेगा, so it will go back to the first frame. Sorry, we don't need this frame 11. So when user will click on this back button, it will go back to our first frame. On tab, इसमें स्मार्ट की बजाय इंस्टेंट एनिमेशन कर देते हैं. Then click on the preview button. When I am dragging, see images move हो रही है. थोड़ा सा फास्ट एनिमेशन हो गया, so we can increase its time. यहाँ से select on it, increase of around 500. So ये small changes करने पड़ते हैं according to animation speed and all these things. Okay, so these are called micro interaction, and we can say कि ये बहुत simple और बहुत basic examples हैं. Obviously आपको और भी इंटरेस्टिंग और भी थोड़ा सा डिफिकल्ट, वी कैन से कि डिफिकल्ट वे में अगर सीखना है तो ऑब्वियसली आपको एक प्रॉपर वे में सीखना पड़ेगा. बिकॉज उतना टाइम, उतनी एफर्ट्स, प्रैक्टिस, ये सब चाहिए. ओके, सो दिस आर सम एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो इंटरेक्शंस. नाउ व्हाट वी लर्न टुडे. सो व्हाट माइक्रो इंटरेक्शंस आर, है ना, दे आर स्मॉल एनिमेशंस. Why they matter? Because they feel alive, है ना. 4 core components, then real world example we have seen already. हम लोगों ने during the presentation भी देखा है, Figma में भी हम लोगों ने practice करके देखा है. Okay, design principles, industry tools like Figma we already seen, and beginner workflow. Okay, so these basic things we have learned about the micro interactions. Okay, thank you.